Energy can neither be created nor destroyed, it can be transferred from one form to another form. अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो मास में से भी तो एनर्जी बनती है और न्यूक्लियर वाला कुछ सीखा था अपन ने, तो दैट इज अनदर थिंग, वो एक अलग से प्रिंसिपल है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, दैट इज मास एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. पर ये चैप्टर के लिए वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली. तो जैसे मैं इसको मोशन में सेट करूंगा, इट विल गो टू पोजीशन सी एंड इट विल कम बैक. यस, सो if you see, there is a slight height difference. Hey learners, this is Dr. Rishi from the Learners Academy, and today we are going to talk about the last part of the chapter work, power and energy. This part deals with conservation of energy and the principle of conservation of energy, obviously. So before we go ahead, let us write down certain things, certain equations that we had studied in the previous class. Okay, so the first equation जो सीखा था वो था force का, force is equal to mass into acceleration. फिर आया, और for gravity it is mg. फिर आया अपना work, और फिर आया power, power is फिर आया work was force multiplied by the displacement और Fs cos theta, अगर वो एंगल पे लगा हो तो. फिर आया power is work divided by time, so that was force multiplied by velocity as well. So these were the basic things that we had studied. एक और चीज था torque का, पर torque यहाँ पर लगने वाला नहीं है, so I am not writing it on the board. पर ये चीजें हैं जो अपने को लगेगी. So let me just make this V. Okay, so now let us go ahead and talk about the principle of conservation of energy. It is one of the most famous principles, और सबसे पहले अपने को सिखाया जाता है 7वीं में. Energy can neither be created nor destroyed, it can be changed from one form to another form. पिछले वाले वीडियो में अपन ने देखा था हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म. तो इलेक्ट्रिकल का रोटेशनल था, इलेक्ट्रिकल का मैकेनिकल था, मैकेनिकल का इलेक्ट्रिकल था, केमिकल का इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रिकल का केमिकल का था, साउंड का इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रिकल का साउंड का था. सो वी कैन ऑलवेज mix up the energy and get it into a different form. However, the total energy always remains same. So this is taught under the principle of conservation of energy. Energy can neither be created nor destroyed, it can be transferred from one form to another form. This is a statement of the principle of conservation of energy. मतलब कोई भी एनर्जी है तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपन डाल सकते हैं. We cannot create it nor can be destroyed. अभी कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो मास में से भी तो एनर्जी बनती है और न्यूक्लियर वाला कुछ सीखा था अपन ने, तो दैट इज अनदर थिंग, वो एक अलग से प्रिंसिपल है, that is the conservation of mass and energy of a system, that is mass and energy of the system always remains constant. पर ये चैप्टर के लिए we are going to focus on the conservation of energy only. तो when I say conservation of energy, I mean total energy of the system. क्या बोलोगे total energy of the system और energy of the system में क्या फर्क है? In the previous part we saw different types of energies. Potential energy था, kinetic energy था, heat energy था, mechanical energy था, electrical energy था, sound energy था. तो what this total energy means addition of all these energies. Basically we add two energies, that is the kinetic and the potential energy. So whenever we talk about total energy, we add the kinetic and the potential energy, and it needs to be same. क्योंकि बाकी सारी जो energies है, chemical energy, electrical energy, magnetic energy, mechanical energy, ये सारी चीजें जो है वो we'll get it after kinetic energy. Kinetic energy can be converted into any of these forms of energies, including heat energy and sound energy as well. But potential can be converted only into kinetic. So ये एक बहुत important चीज है that you have to keep it in your mind that potential energy
can be converted only into kinetic energy. Only. फिर kinetic energy we can convert it into heat, sound, light, mechanical energy, magnetic energy, and so on and so forth. तो जितने भी टाइप ऑफ एनर्जी, केमिकल एनर्जी फॉर दैट मैटर, तो काइनेटिक एनर्जी को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल को डायरेक्टली इन चीजों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अभी लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट थियोरेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे, काइनेटिक को पोटेंशियल में या फिर पोटेंशियल को काइनेटिक में, या फिर टोटल एनर्जी जो है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, ये कैसा प्रूव किया जाएगा। सो लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल। अपने पास एक बॉडी है जिसका लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल। अपने पास एक बॉडी है, यहां पर just section this out for you. So I have body here and it is lifted. यहां पर अभी ये पॉइंट जो है let us name it as A, other way around, let us name it as A. Then we have a point B here somewhere and then we'll have this point as point C. Okay, now ये B कितने हाइट पर है? It is at a height x from the top. ये जो डिफरेंस है ये है x, ये मेरा टोटल हाइट है h, और ये जो मेरा पार्ट है तो ये बन जाएगा h माइनस एक्स। तो h माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये h हो जाएगा। सो बेसिकली क्या करें अपन, ये ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड से मेरे बॉडी है जिसका मास m है, आई एम लिफ्टिंग इट अप हियर। ओके, तो व्हेन आई लिफ्ट द बॉडी अप हियर, तो यहाँ पर it would not have any kinetic energy because I am just holding it at point A. It would have potential energy. That potential energy would be given by mgh. यहाँ पर potential energy जिसको अपन generally U बोलते हैं, that is going to be equal to mgh, और we'll have kinetic energy will be, जिसको K बोला जाता है, would be equal to 0. और once the body falls down, once we drop it from here, it starts descending, it comes and hits here at point C. तो point C पर इसका एनर्जी कितना आएगा? अभी point C पर it has only kinetic energy because इसका पोजीशन जो उसका हाइट 0 हो चुका है, h is 0 at this point, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0. So at point C, potential energy U is equal to 0. Potential energy U is equal to 0 and kinetic energy is equal to half mv square. ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी 0. Now what happens at point B? At point B, मेरा जो पोटेंशियल एनर्जी है, it is at a height h minus x, और मेरा काइनेटिक एनर्जी जो है, so potential energy would be mg h minus x, and मेरा kinetic energy जो है it is going to be equal to mg x. okay, अभी mg h minus x तो काफी सिंपल है, पर mg x कैसे आया वो अपन बाद में देखेंगे, ओपन बाद में देखेंगे। तो now let us go ahead and check out what is the total energy at point A, at point B and at point C. At point A body move हो रहा है? नहीं हो रहा, meaning at A V is equal to 0, H is equal to H, मेरा height A is equal to acceleration due to gravity, और m तो m ही रहेगा, तो total energy would be equal to the potential energy plus the kinetic energy. Potential energy कितना है इधर?
at this point, since you raised it to height h, it is going to be mgh plus kinetic energy कितना होगा? So it is going to be 0 because there is the body is not having any velocity, giving me the final answer of the total energy as mgh. अभी at point B देखते हैं क्या हो रहा है. अभी B में क्या हुआ है? अपन ने A से इसको छोड़ दिया, बॉडी नीचे गिर रही है एंड V एक रैंडम पॉइंट है जिसका डिस्टेंस टॉप से x है. तो अभी इसमें कितना होगा टोटल एनर्जी? ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना बहुत इजी है. पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, दैट इज द मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ दैट पॉइंट. तो ये पॉइंट का हाइट है h minus x, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं mgh minus x. अभी इशू होने वाला है विद द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये पॉइंट पे, तो अभी वो कैसे फिगर आउट करेंगे अपन. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. अभी जब भी अपन हाफ mv स्क्वायर लेंगे तो मुझे चाहिए v एट दिस पॉइंट. अभी v के लिए मैं क्या करना पड़ेगा मुझे v फाइंड करने के लिए? तो आई वुड हैव टू यूज द किनेमेटिक इक्वेशन. किनेमेटिक इक्वेशंस जिसमें वेलोसिटी हो, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी हो, और कौन सी चीज दी गई है मेरे को? तो द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन, ओनली द डिस्प्लेसमेंट इज गिवन. ओके, सो the formula for kinematic equation would be v square is equal to u square plus 2as. ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है. सो इस केस में मेरा v क्या है? तो मेरा v मेरे को पता नहीं है, so I write v square as it is. मेरा u क्या है? my u is going to be 0, initial velocity 0 है, मेरा a है acceleration due to gravity, और मेरा s है ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है that is equal to x. तो मेरा v स्क्वायर आ जाता है 0 plus 2 times g times x, that is v square is equal to 2gx. अभी ये v स्क्वायर को अपन इधर डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं. So we'll get the kinetic energy as half times m times 2gx. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए and I'm left with mgx. So mgx हो गया मेरा kinetic energy at point B. Okay, take a screenshot of this because I'm going to erase it because I have to find it for point C as well. ये कितना मेरा potential energy है? mgh minus x plus mgx. What is common between them? mg is common, so I take mg outside and I am left with h minus x plus x. x cancelled and I am left with mgh. So you see total energy at point B is also equal to mgh. Okay, point A पे भी mgh था, point B पे भी mgh. So you can take a screenshot of this. This is how we got, or rather this is how we proved that the total energy is equal to mgh at point B as well. अभी अपन देखेंगे point C पे क्या होगा. C पे थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला है. So इधर लिख देता हूँ मैं. At A, total energy is equal to mgh. At B also total energy is equal to mgh. And at C total energy is equal to, अभी अपन फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी कितना. तो at C U is equal to 0. पोटेंशियल एनर्जी मेरा 0 है. काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना है? अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? तो इट शुड बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. ओके, अभी ये वेलोसिटी ये पॉइंट पे कितना होगा? तो जैसे अपन ने b पे कैलकुलेट किया एग्जैक्टली वैसे ही वेलोसिटी इधर भी कैलकुलेट करेंगे. वी नो दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अभी इधर फन पार्ट ये है कि v स्क्वायर u तो मेरा 0 है प्लस 2a मेरा acceleration due to gravity है, so that is g, and मेरा s is the displacement would be from point A to point C, so that is going to be h. So ये आ जाएगा mgh. mgh को इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने. I get kinetic energy is equal to half m times 2gh.
ये कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद mgh. ओके, सो माय नाउ अभी देखेंगे कि टोटल एनर्जी कितना हो रहा है. तो टोटल एनर्जी वुड बी अगेन द पोटेंशियल एनर्जी प्लस द काइनेटिक एनर्जी. सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 प्लस mgh, giving me the final total energy as mgh. So अपन ने देखा कि at all these 3 points A, B and C total energy exactly same है और इसको बोलेंगे इसका वैल्यू रहेगा mgh. ओके, तो this is how we can prove that the total energy at point A, B or C is always going to remain the same. चेंज ये होने वाला इसमें कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी. सो पोटेंशियल एनर्जी, सो इफ यू हैव एट द टॉप द पोटेंशियल एनर्जी इज वेरी हाई, काइनेटिक एनर्जी इज 0. तो जैसे जैसे बॉडी नीचे गिरेगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी. सो व्हेन इट कम्स टू द बॉटम और द ग्राउंड लेवल, मेरा पोटेंशियल एनर्जी 0 होएगा एंड मेरा काइनेटिक एनर्जी वुड बी मैक्सिमम. सो दिस वाज अबाउट change in kinetic energy and potential energy, and though the kinetic energy and potential energy are going to change, the total energy is always going to remain the same. This is going to be irrelevant to the way of motion. अपन upward जा रहे, downward जा रहे, the motion is going to be exactly the same. That is, it is not the motion, the total energy is going to be irrespective of the motion. अगर अपन ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, एनर्जी एग्जैक्टली सेम रहेगा, मोशन से फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है. अभी सो ये एप्लीकेशन कहाँ पर यूज होता है? ओके, सो वन प्लेस दैट वी यूज इट अ लॉट इज इन पेंडुलम. अभी पेंडुलम में क्या होगा? सो लेट अस सी दिस. सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज when we deal with the pendulum. So here we have a pendulum, we have a bob which is hung to a string. Now we are going to assume that the string is inextensible. मतलब उसका अगर weight इधर बढ़ जाए तो वो extend नहीं होगा, खींचेगा नहीं. Okay, we are going to assume it. Practicality में थोड़ा सा change होता है, but it doesn't actually have a huge issue. तो when I set this pendulum in motion, तो अभी इसकी 3 positions है जो आपको ध्यान में रखनी है. This is the mean position जहाँ पर ये है without any force on. So let us mark it here. So this is my position. So it is position A that I have. Okay. अगर मतलब इसको छोड़ देंगे ऐसे तो वो अपने आप से ये पोजीशन पे आएगा. Okay. Now, then so this is the mean position and then I have the extreme position. तो एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ पर भी हो सकता है, wherever I want to take it. Yes, पर लंबा वाला एक्सट्रीम पोजीशन लेने का प्रॉब्लम ये हो जाता है कि the angle becomes large and when the angle becomes large we have a problem. Okay, because फिर चीजें सेम वे से काम नहीं करती, because when we talk about force and work there is that cos theta that is there. So we try to keep the theta as small as possible. Generally 10 डिग्री 5 से 10 डिग्री अपन लेते हैं whenever we do experimental setups. तो if I apply a small motion to the pendulum, तो ये जो extreme में आ रहा है that is called the extreme position of the pendulum. तो इसको extreme position बोलेंगे, उसको दूसरा extreme position बोलेंगे. Okay, so let us first set this extreme position. So ये यहाँ पर एक और पोजीशन है जहाँ पर मैं B बोलूँगा इसको, और जब ये छोड़ दूंगा मैं तो यहाँ से छोड़ रहे अपन इसको, तो यहाँ पर एक ये पोजीशन आ रहा है, ये दूसरा पोजीशन हो गया. So this is my position C. So effectively I get my position A, B and C. मैं बॉल को A से B की तरफ ले रहा हूँ and then I am releasing it. तो उस साइड को C तक जाकर वापस आ रहा है. That is the extreme position for C and this is the extreme position for. So B and C are my extreme positions. तो अगर आप देखोगे तो जैसे मैं इसको मोशन में सेट करूँगा
it will go to position C and it will come back. Yes. So if you see, there is a slight height difference. अगर मैं A का let me hang it separately. So if you look at this, ये मेरा horizontal है, so there is going to be a small height difference at these points. So this is going to be H and H. Now, because of the conservation of energy, these heights need to be exactly the same. Okay. So now at point B and C, we are going to get potential energy, and the potential energy is going to be equal to maximum at these 2 points, and we can write it as potential energy as mgh, and kinetic energy would be 0. At point A, my potential energy is going to be 0 because the height is 0, and my kinetic energy is going to be equal to half mv square. Same way at point C, my potential energy is going to be equal to mgh, and my kinetic energy is going to be equal to 0. तो अगर अपने को इसका velocity find करना है at this point, then it is always going to be equal to root of gh. अगर अपने को इसका velocity find करना है at this point, then it is going to be equal to root of 2gh. तो हम देखेंगे वो कैसा आएगा. But now try to understand what is happening here. When I am raising this ball by a height h, there is some potential energy that is getting stored in it, and when I release it, it is, when I raise this ball at a height h and when I release it, you see that it would go to point C and come back. Yes. एक और चीज है जो अपन we are not going to consider it, and that is the frictional force or the drag by the atmosphere. इस drag की वजह से ये जो oscillations है ये छोटे छोटे होते जाएंगे, and at the end it would come to rest at point A. तो अभी देखेंगे कि ये जो velocity है इधर, ये maximum velocity कितनी हो सकती है. तो what have we seen from the conservation of energy? We have seen that the maximum velocity, half mv square, is going to be equal to mgh, because the total energy needs to be same. So the addition of these two is going to be equal to the addition of these two. So we would get, so therefore we can cancel out the m's on both the sides, and we can write v square is equal to 2gh, or v is equal to root of 2gh. Now, so for any pendulum at any point, all we need to know is h, and we would be able to find the velocity at that point. So say suppose, since it's making a arc like this, even if we consider it at this point, then also this height would be considered to find the velocity v1 at this h1. So no matter where we go, no matter what we do, at the end of the day, our v1 is going to be equal to h1, or the velocity would always, our v1 is going to be equal to root of 2g h1, and it is always going to depend on the value of h. So now we have applied the principle of conservation of energy in this particular example. Now where can we have it in our real life? ये बहुत बड़ा crucial चीज है. Many people ask me, सर ये use कहाँ पे होगा? तो एक जगह है जहाँ पर use हो सकता है when we say we have a swing. So if you sit on a swing, झूले पे बैठ गए, आगे पीछे जा रहे हो अपन, yes? तो जितना आप पीछे जाओगे वो उतना ही आपको आगे लेके जाएगा at the same height. This is very crucial. Conservation of momentum ये बताता है कि जितना ये height है उतना ही ये दूसरे साइड का भी height होना चाहिए. Obviously थोड़ा सा frictional force ऐड होगा उसमें, थोड़ा सा drag ऐड होगा तो थोड़ा सा height कम हो सकता है, but in general the height is going to remain the same. Other places where we see principle of conservation of energy is when we say when we hammer a nail, कील ठोक रहे हैं तो depends कौन सी वाली कील ठोक रहे हैं, छोटी वाली ठोक रहे हैं, बड़ी वाली ठोक रहे हैं, छोटी वाली ठोक रहे हैं, तो we need a smaller hammer. छोटा hammer लेंगे and we'll pull the hammer back. It would increase the potential energy, and when it hits the nail is pierced inside the wall or inside a piece of wood.
तो ये दोनों चीजों में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड दैट काइनेटिक एनर्जी इज पुशिंग द nail inside the wall. Same is with breaking a log. So when if you've seen a woodcutter, अगर वो बड़े-बड़े logs को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसका जो axe रहेगा, कुल्हाड़ी रहेगा, वो काफी मोटा वाला रहता है. When they are trying to break larger logs, तो वो मोटा वाला जो कुल्हाड़ी है, it is very heavy. तो उसको he would properly rise it up and then he would strike the log with all his might, all his strength. Now there is a lot of potential energy which is stored in the axe, and when the axe comes and hits the log, it breaks it. There are many. So friends, that was all about conservation of energy. If you found this video interesting, please give us a thumbs up. It motivates us to perform and make better videos. Please do subscribe to our channel and share it with your friends. This was Dr. Rishi from the Learners Academy. Thank you.